Hi everyone, welcome to the Trade of the Week update segment once again. As you all are aware, the objective in Trade of the Week segment is to impress upon you the effectiveness of the demand and supply strategy and how the strategy works beautifully well if the bigger time frame, the intermediate time frame are nicely aligning with you. ओके, ट्रेड ऑफ द वीक में आपका स्वागत है। यहां पर ये सेगमेंट का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि डिमांड और सप्लाई स्ट्रैटेजी किस प्रकार चलती है और अगर ट्रेंड और कर्व दैट इज हायर टाइम फ्रेम, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम आपके अगर फेवर में हो तो ऑड्स कैसे बढ़ते हैं। ओके, अलग अलग उदाहरण से हमारे एक्सएलटी सेशन के ट्रेड्स के माध्यम से हम लोग ये समझाने की कोशिश करते हैं। सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू टेक वन ट्रेड ऑफ डिक्सन। हम लोग डिक्सन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये ट्रेड 6 मार्च को प्लान किया था। वी हैड प्लान दिस ट्रेड ऑन 6th of March and it played out quite nicely from the level that we identified. But before we get into the result of the trade and how it moved after getting into the demand zone, let us quickly get into the thought process uh, while planning the Dixon trade so that you understand what logic did I apply while planning the trade in Dixon. So let's straight away go to the 6th March 2024 session and understand the Dixon trade planning process. So Dixon was making new highs in the morning. So ये बहुत strong stock है friends. काफी समय से ऊपर ही जा रहा है. So Dixon, this is my weekly time frame, no supply, daily time frame trend up and in line with daily demand. I have a 125 minutes demand zone just above it where I want to participate. 6110 to 6472. तो यहाँ पर हम लोग डिक्सन में WIT लॉन्ग जाना चाहते हैं। नो नो, इट्स अ टाइप 1 एंट्री। मैंने अगर कंफर्मेशन है तो मैं यहाँ पर क्लियरली लिखूंगा इट इज एन एंट्री टाइप 1 and Dixon is also entry type 1. Okay, but a little far, nevertheless, Dixon right now. Now that you have understood how the trade was planned in Dixon, let us understand the result and the outcome. As you can see, this was a drop based rally that I had identified in line with the bigger time frame analysis, and markets actually were falling sharply. If you see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 candles in a row, we had lower low, lower low, lower low, and the stock coming into a very strong demand zone. The reason we had conviction to buy even after such big red candles, it's because the quality of the level was very nice. हमें कन्विक्शन था इतने बड़े फॉल के बाद लेने का भी, क्योंकि लेवल का क्वालिटी जो था वो काफी अच्छा था. एंड हाउ डू वी जज लेवल क्वालिटी फ्रेंड्स? द एक्सप्लोसिव मूव व्हेन द प्राइसेस वेंट आउट ऑफ द जोन, द न्यू हाई इट मेड एंड द ओवरऑल स्ट्रक्चर. ओके, जिस तरीके से जोन ने प्राइजेस ने जोन को छोड़ा था वो बहुत ही एक्सप्लोसिव था, नया हाई भी बनाया एंड जोन का ओवरऑल स्ट्रक्चर भी क्वालिटी था. बिकॉज ऑफ विच ओके, जब बाकी दुनिया थोड़ी बेरिश थी, बाकी दुनिया बेच रही थी, प्रोबेबली ये स्टॉक रेड कैंडल यही बता रहे, वी वेंट अहेड, had little bit of conviction, had our stop loss, we went ahead and bought that stock at this level. So our entry was somewhere around 6687. Our stop loss was below the distal line, and our first target was 2:1, 1.5 and 2:1. Again, the stock came into the demand zone and worked out extremely well in our favor. In fact, eventually इसने 3:1 के आसपास भी दिया, although our trade was 2:1. Some people did trail it, but this was our original trade in Dixon. Now, again, जिंदाल स्टील के ट्रेड में जो हमने ट्रेड ऑफ द वीक सेशन में डिस्कस किया, आपने देखा होगा दैट मूविंग एवरेज कॉन्फ्लुएंस एक एडिशनल ऑड्स एनहांसर था, जिसकी वजह से हमारा कन्विक्शन लेवल बढ़ गया. इन जिंदाल स्टील ट्रेड which will be discussed or which we have discussed in the trade of the week session, the additional odds and answers was the moving average confluence, the moving average confirmation. So what was the additional confirmation in Dixon that we had? So friends, in Dixon, the additional confirmation came from the coinciding level. So if you just observe, when the stock gave entry on 13th of March, so we had planned the trade on 6th of March, but when the stock gave entry on the 13th of March, okay, this entire demand zone was also coinciding with daily drop base rally, which means the 125 minutes drop base rally was coinciding with the daily drop base rally,
which enhance the probability of level working out in our favor. और जिसके चलते ये डबल सपोर्ट की वजह से आपने देखा कि डिक्सन में जो मूव आया वो बहुत ही शार्प आया, बहुत ही स्ट्रांग आया, एंड लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ आवर स्टूडेंट्स डिड एक्चुअली एंजॉय। जो सेशंस देख रहे हो, शायद आपने भी ये रैली मोस्टली कैप्चर की होगी, एंड दिस इज द शेयर पावर of the coinciding levels which we had in Dixon. So I hope you enjoyed this small update. For following more of these updates, more such updates, please follow the Sher Khan Education channel and especially the Trade of the Week segment. Thank you. This should not be treated as a recommendation. Please conduct your own analysis or consult a financial advisor before investing.